Hey guys, welcome back to the channel. Hmm. ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? आगे बढ़ते हैं. Barnes succeeded because he chose a definite goal, placed all his energy, all his willpower, all his effort, everything back of that goal. मतलब बार्न्स कैसे अचीव कर पाया अपने गोल को, क्योंकि उसने जितनी एनर्जी थी सारी लगा दी, जितनी विल पावर थी एक सिंगल गोल के पीछे लगा दी, जितना एफर्ट था सब उसके पीछे लगा दिया. एवरीथिंग बैक ऑफ दैट गोल. He did not become the partner of Edison the day he arrived. He was content to start in the most menial work as long as it provided an opportunity to take even one step towards his cherished goal. ठीक है. 5 years passed before the chance he had been seeking made its appearance. During all these years, not one ray of hope, not one promise of attainment of the desire had been held out to him. मतलब इतने सारे टाइम में भी उसको, मतलब उसकी डिज़ायर उससे हमेशा आगे बढ़ाती रही. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो डिमोटिवेट हो गया, कुछ ऐसा हो गया. टू एवरी वन एक्सेप्ट हिमसेल्फ ही अपीयर्ड ओनली अनदर कॉक इन द एडिसन बिजनेस व्हील, बट इन हिज ओन माइंड ही वॉज the partner of Edison every minute of the time from the very day that he first went to work there. Hi Yashwant Padal, how are you? Welcome back to the channel. नीरज चोपड़ा सेकंड आए, क्या बात है? कुछ पॉइंट्स ही रह गए थे. अच्छा खेला उनने. टीम इंडिया भी जीत गई आज. मज़ा ही आ गया. It is remarkable illustration of the power of a definite desire. Barnes won his goals because he wanted to be a business associate of Mr. Edison more than he wanted anything else. He created a plan by which to attain that purpose, but he burned all bridges behind him. He stood by his desire until it became the dominating obsession of his life and finally a fact. When he went to Orange, he did not say to himself, I will try to induce Edison to give me a job of some sort. He said, I will see Edison and put him on notice that I have come to go into business with him. उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एडिसन के पास जाऊंगा और जॉब मांगूंगा कि भाई मुझे जॉब दे दो, जॉब दे दो. उसने हमेशा ये कहा कि मैं एडिसन से मिलूंगा और उनको बोलूंगा कि भाई मेरे साथ बिजनेस करो. He did not say I will work there for a few months and if I get no encouragement I will quit and get a job somewhere else. उसने कभी ये नहीं बोला कि मैं ये जॉब को क्विट कर दूं और फिर उसके बाद कुछ फ्यू मंथ बाद मैं इससे, मतलब अगर मेरे को वो जॉब नहीं मिली तो मैं कुछ टाइम ऐसे ही कहीं और जॉब करके फिर क्विट कर दूंगा. ऐसा कभी नहीं सोचा. कभी भी ये नहीं सोचा कि थोड़े टाइम एडिसन के साथ काम करूंगा और फिर क्विट कर दूंगा. बिना इंकरेजमेंट के अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं जॉब क्विट कर दूंगा. ऐसा सोचा ही नहीं उनने. हमेशा उनने क्या सोचा, आई विल स्टार्ट एनीवेयर. मैं कहीं से भी शुरू करूंगा, चाहे मुझे बिल्कुल प्यून की नौकरी भी दे दो पर एडिसन के अंडर. आई विल डू एनी थिंग एडिसन टेल मी टू डू. मुझे कुछ भी एडिसन बोलेगा मैं करने को तैयार हूँ, बट बिफोर आई एम थ्रू आई विल बी हिज एसोसिएट. मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसका एसोसिएट बनना है, चाहे वो मुझे कोई भी काम दे दे. He did not say I will keep my eyes open for another opportunity in case I fail to get what I want. In the Edison organization, he said, there is but one thing in this world that I am determined to have, and that is business association with a Thomas Edison. I will burn all bridges behind me and stake my entire future on my ability to get what I want. He left himself no possible way to retreat. He had to win or perish. That is all there is to the Barnes story of success. A long while ago, a great warrior faced a situation which made it necessary for him to make a decision which ensured his success on the battlefield. He was about to send his armies against a powerful foe, whose men outnumbered his own. He loaded with his soldiers into boats, sailed to the enemy's country, unloaded soldiers and equipment, then the order to him gave order to burn the ship that had carried them. Addressing his men before the first battle, he said, you see the boats going up in the smoke? That means that we cannot leave the shores alive unless we win. We now have no choice. We win, we perish. They won. तो क्या हुआ था कि बोट्स को भेजा गया
और दोबारा बोट्स बुलाई और उन पे आग लगा दी। अब क्या हुआ कि मतलब जहाँ पे हमने सैनिक जो भेजे थे ना, हमने एक सैनिक की टोली भेजी और वो बोट्स को कुछ वापस मंगाया और उन बोट्स को आग लगा दिया। अब चारा क्या बचा था सोल्जर्स के पास कि अगर वो सोल्जर्स लड़ेंगे और जीतेंगे तभी वो ज़िंदा बच सकते हैं, और कोई चारा नहीं था। और हुआ क्या इस एक्सपेरिमेंट का मतलब, इससे वो लोग जीत भी गए, क्योंकि भाई जीने की इच्छा हर किसी के अंदर है और इनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, या तो मरना था या तो करना था, तो इन्होंने करना चुना। Every person who wins in an undertaking must be willing to burn his ships and cut all sources of retreat. Only by so doing can one be sure of maintaining that state of mind known as a burning desire to win, essential to success. The morning after the Great Chicago Fire, a group of merchants stood on State Street, looking at smoking remains of what had been their stores. They went into a conference to decide if they would try to rebuild or leave Chicago and start over in more promising section of the country. They reached a decision, all except one, to leave Chicago. The merchant who decided to stay and rebuild pointed a finger at the remain of his store and said, "Gentlemen, on that very spot I will build the world's greatest store, no matter how many times it may burn down." उन्होंने कहा चाहे कितनी बार मेरी शॉप जल जाए बट मैं दुनिया की नंबर 1 स्टोर बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दैट वाज मोर देन 50 years ago द स्टोर वाज बिल्ट। मोर देन 50 years लगे पर स्टोर दोबारा बनी। It stands there today, a towering monument to the power of that state of mind known as burning desire. The easy thing of Marshall Field to have done would have been exactly what his fellow merchants did. When the going was hard and the future looked dismal, they pulled up and went where the going seemed easier. Mark well this difference between Marshall Field and the other merchant, because it is the same difference which distinguishes Edwin C. Barnes from thousands of other young men who have worked in the Edison organization. It is the same difference which distinguishes practically all who succeed from those who fail. Every human being who reaches the age of understanding of the purpose of money wishes for it. Wishing will not bring riches, but desiring riches which with a state of mind that becomes an obsession, then planning definite ways and means to acquire riches and backing those plans which persistence which does not recognize failure will bring riches. The method by which desire for riches can be transmuted into the financial equivalent consists of 6 definite practical steps. First, fix your mind an exact amount of money you desire. It is not sufficient merely to say, "I want plenty of money." Be definite as to the amount. There is psychological reason for definiteness which will be described in the subsequent chapter. अब देखो क्या बात कही है, अपने दिमाग में क्या करना है। The method by which desire for riches can be transmuted into a financial equivalent consists of 6 definite practical steps. 6 practical steps में डिवाइड है, अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। है क्या? फिक्स इन योर माइंड दैट एग्जैक्ट अमाउंट यू डिज़ायर। तो मैंने सोच लिया है कि आई नीड 10 करोड़, ठीक है 10 करोड़। इट इज़ नॉट सफिशिएंट मर्ली टू से आई वॉन्ट प्लेंटी ऑफ मनी, ठीक है। तो मैंने 10 करोड़ अपने दिमाग में सोच लिया है कि मुझे 10 करोड़ चाहिए आज के आज, मतलब आज के आज मतलब इन द सेंस कि अभी इस एज के अंदर। बी डेफिनाइट एज टू द अमाउंट. देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन फॉर डिफाइडनेस which will be described in the subsequent chapter. Determine exactly what you intended to give in return for the money you desire. There is no such reality as something for nothing. ठीक है, और सेकंड क्या है, डिटरमाइन एग्जैक्टली वॉट यू इंटेंडेड टू गिव इन द रिटर्न फॉर द मनी यू डिज़ायर। मतलब आपको क्या रिटर्न में देना होगा उन पैसों के बदले। देर इज़ नो मच रियलिटी, देर इज़ नो सच रियलिटी एज समथिंग फॉर नथिंग. Establish a definite date when you intend to possess the money you desire. Create a definite plan for carrying out your desire and begin at once, whether you are ready or not, to put this plan into action. Fifth, आपको क्या करना है फोर्थ में, कि आपको एक डेफिनेट प्लान बनाना है, क्या आपको करना है अपने डिज़ायर को फॉलो करने के लिए. बिगिन एट वंस वेदर यू आर रेडी और नॉट टू पुट दिस प्लान इनटू एक्शन. और उस प्लान पे अगर आप अभी सक्षम नहीं हो उसे करने के लिए तो भी करो, स्टार्ट कर दो. फिफ्थ, राइट आउट अ क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी यू इंटेंडेड
to require the name and the time limit for its acquisition. मतलब एक टाइम सेट करना होगा आपको, ये नहीं कि बस करे जा रहे हो, हो जाएगा, ठीक है. राइट आउट अ क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी यू इंटेंडेड टू एक्वायर. एक आपको स्टेटमेंट बनानी होगी कितना पैसा आपको चाहिए. नेम द टाइम लिमिट फॉर इट्स एक्विजिशन, एक टाइम बनाना होगा 10 करोड़ इस साल में. स्टेट व्हाट यू इंटेंडेड टू गिव इन द रिटर्न ऑफ द मनी for the money and describe clearly the plan through which you intended to accumulate it. Read your written statement aloud twice daily, once just before retiring at night. मतलब सोने से पहले आपको अपनी वो चीज़ों को पढ़ना होगा. And once after rising in the morning as you read, see and feel and believe yourself already in the possession of the money. तो जब आप इसको सोचोगे, करोगे और हासिल करोगे तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और आप इसी को करोगे. ठीक है. तो सुबह उठ के आपका पैसा आपके हाथ में होगा, ऐसी बातें ही कह रहा है. मतलब जब आप चीज़ों को फील और बिलीव करोगे तो आपके पास अपने आप ही आएगा. ठीक है. चलो गाइस, हमने चैलेंज को मतलब तोड़ा नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे. अभी हम एक बार जुकाम वगैरह ठीक हो जाए ना, फिर उसके बाद बैक टू बैक पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे. तो चलो, कल सुबह मेरे को फिर से प्रैक्टिस पे जाना है और आज भी हमने थोड़ी सी बुक पढ़ी है पर हम इसे जल्दी ख़त्म करेंगे. सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.